हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का माई इंग्लिश बुक 8 1.4 मिस स्लीपेरी इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन आंसर्स देखने। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू डिफरेंट वर्ड्स आर ज्वाइनिंग टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विथ अ न्यू मीनिंग. सच वर्ड आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स. समटाइम्स देयर इज हाइफेन बिटवीन कंपाउंड वर्ड्स. हाइफेन भी हो सकते हैं. तो हमें यहाँ पे दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. पुट आउट सम कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द लेसन. देखो लेसन में से हमें कुछ कंपाउंड वर्ड पुट आउट करना है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है होमवर्क और काइंड हार्टेड. ओके, वैसे ही देखो नोटबुक, वेल प्रिपेयर्ड, नेवर एंडिंग, हाई पिच्ड, रेड हॉट और क्लासरूम. क्वेश्चन 2 ए है, उसमें एड द प्रॉपर प्रीफिक्स टू मेक द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग. फर्स्ट वन है ओबे. प्रॉपर प्रीफिक्स ऐड करके हमें उनको अपोजिट वर्ड में राइट करना है. तो ओबे का क्या आएगा? डिसओबे. सिंपैथेटिक, अनसिंपैथेटिक. हॉनर, डिसहॉनर. अफेड, अनअफेड. कंटेंट, डिसकंटेंट. एड सफिक्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड टू एडजेक्टिव फॉर्म. तो लाफ का लाफिंग, फॉरगेट का फॉरगेटफुल, काउंट काउंटेबल, मूव मूवेबल, पनिश पनिश्ड, थॉट thoughtful, care careful, fear fearful, tear tearful, joy joyful. Question 3, find words or expression from the story which are similar in meaning to. इनके जैसे मीनिंग कौन सी लाइन्स का है और वर्ड्स का है, वो वर्ड हमें स्टोरी में से राइट करने हैं. तो फर्स्ट है वेरी एक्सपेंसिव, एक्स्ट्रावेगेंट, लॉन्गिंग फॉर, इयरिंग, could not remember at all, went blank, constant, perpetual, gather all one's courage, muster courage, feel an increase in size, inflate, paining badly, bruised, forced to pay a big amount of money, making pay through notes. Question 4, answer in short in your own words. First है, the history teacher had asked him to memorize it. What? Answer, the cause and effect of the battle of Panipat. Question 2, Sally's new frock tore who? Answer, when Sally fell and came tumbling down about 7 steps from the school stairs. Sally hugged him tight. Who? Sally ने किसको हग किया? आंसर, her younger brother. Question 4, Sally was called slippery. Why? Sally को slippery क्यों बोलते थे? आंसर, because other sleeps on wet ground but Sally manages to sleep even on dry land. Question 5, teacher told Sally to meet her in teacher's room. When? कब बोला? Answer, when Sally came late and the teacher was in the classroom. Question 6, teacher asked Sally to carry the notebooks. Where? कहाँ पे? Answer, teacher asked Sally to carry the notebook to teacher's room. Question 3, decide the class in 2 groups. Divide the class in 2 groups with the help of your teachers and convert the story into skit. स्टोरी को स्किट में कन्वर्ट करना है. ईच ग्रुप कैन टेक अप वन पार्ट ऑफ दैट स्टोरी. प्रेजेंट द स्किट इन योर क्लास. तो ये आपको खुद को करना होगा बच्चों. क्वेश्चन 6, व्हाट एक्सप्रेशन डू अ पर्सन यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन अ पर्सन गेट्स अ सडन फ्राइट. आंसर, ओ माय गॉड, ओ डियर. सेकंड, व्हेन अ पर्सन इज वेरी नर्वस. आंसर, but butterflies in my stomach. Second, bundle of nervous. Question 3, when a person is tensed. Answer, under a lot of pressure, stress out. Question 4, when a person is very happy. Answer, on cloud 9, wisdom. Third one, happy as a calm. Fifth number question, when a person is very confident. Answer, will not let you down. Second, why not me. Third one, I am damn sure. Sixth number question, when a person is very angry. Answer,
no harm feelings. Second, pissed off. Third one, to bite someone's head. 7 number question, when a person is very sad. Answer, first one, lump in the throat. Second, feeling blue or to have the blues. Third one, on pins and needles. लैंग्वेज स्टडी है, देखो यहाँ पे some verbs in English do not change in a regular pattern. These verbs are called irregular verbs. Fill the form of verbs in the following table. वर्ड को टेंस फॉर्म में हमें राइट करना है. 2 are done for you. तो दो हमारे लिए डन कर दिया है. तो आंसर है go, went, gone. come, came, come. sing, sang, sung. उसके बाद buy, bought, bought. drive, drove and driven. fall, fell and fallen. know, knew, known. run, ran, run. see, saw, seen. take, took, taken. सेकेंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. फर्स्ट है आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स. बी टीचर्स हैव आस्क्ड अस टू लर्न इट अप. In sentence A, the verb indicates an action that is continuous or in progressive at a particular time, past, present or future. The verb is said to be in continuous progress tense. Was coming is an example of past continuous tense. Okay. Auxiliary verb plus main verb plus ing वो रहते हैं continuous tense. Okay. Auxiliary verb रहते हैं, main verb रहते हैं और ing form of verb रहते हैं, वो continuous tense होते हैं. In sentence B, the verb indicates an action that is complete at particular time, past, present or future. The verb in then said to be in perfect tense. Has asked is said to be in present perfect tense. Has, have, had plus verb in past participate form, ये perfect tense. Question 3 उसमें first है fill up the table of tense using the verb give. तो देखो ये है टेबल कंप्लीट. ओके, ये हो गया टेबल कंप्लीट. क्वेश्चन 2 से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस. कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट टेंस हमें बताना है. फर्स्ट है आई वॉज एंटरिंग द क्लास, ये कंटिन्यूअस टेंस है. सेकेंड द गर्ल्स आर टीचिंग मी, ये कंटिन्यूअस टेंस है. थर्ड वन आई हैवंट सेड अ वर्ड टू यू, तो ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है. उसके बाद 4 नंबर है नेवर बिफोर हैड एनीवन लैविश लव ऑन मी, तो ये परफेक्ट टेंस है. 5th वन है यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है. 6th वन अकॉर्डिंग टू द टीचर आई हैड ड्रॉप्ड द नोटबुक ऑन पर्पस, तो ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है. क्वेश्चन 4 टर्न द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट में सेंटेंस टर्न करना है. एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे शो मी द वे टू पोस्ट ऑफिस, और इसको कैसे टर्न किया है देखो वुड यू प्लीज शो मी द वे टू पोस्ट ऑफिस. अभी हमारे पास सेंटेंस है, उसको हमें टर्न करना है पोलाइट रिक्वेस्ट में. फर्स्ट वन टेक मी टू योर टीचर, पोलाइट रिक्वेस्ट में सेंटेंस टर्न हो गया. वुड यू प्लीज टेक मी टू योर टीचर. सेकेंड वन टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल. आंसर वुड यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल. थर्ड नंबर क्वेश्चन गिव मी द डिटेल अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. आंसर है कुड यू प्लीज गिव मी द डिटेल्स अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. फोर्थ वन है प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी. आंसर में देखो पोलाइट रिक्वेस्ट में सेंटेंस टर्न हो गया वुड यू प्लीज प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी. एक्टिविटी यहाँ पे नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल हमें कंप्लीट करना है. यहाँ पे दिया क्या है वर्ड्स मीनिंग इन इंग्लिश मीनिंग इन मराठी. ओके, तो देखो ये टेबल कंप्लीट हो गया. ओके, फाइंड मोर सच इंग्लिश वर्ड विच विल बी मीनिंगफुल इन योर मदर टंग टू. रिडल्स है इसमें ग्रुप एक्टिविटी. द टीचर्स डिवाइड द क्लास इन 4 ग्रुप्स. टीचर आस्क द ग्रुप टू रीड द रिडल्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच वन. द ग्रुप दैट finishes correctly first is the winner.
जो ग्रुप पहले करेक्टली फिनिश करेगा वो विनर रहेगा। उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि व्हाट कम डाउन बट नेवर गोज अप, उसका आंसर है रेन। व्हाट हैज हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप, तो इसका आंसर है क्लॉक। व्हाट हैज अ नेक बट नो हेड, इसका आंसर है शर्ट। व्हाट कैन यू सी इन अ कैलेंडर एज वेल एज ईट इट अप, तो इसका आंसर है डेट्स। व्हाट बिलोंग टू यू बट इज अ नीड मोर बाय अदर्स, माय नेम। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.